हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी। बहुत प्यारी स्टोरी है, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ आई हैव अ चांस। व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है और वो ये है कि इंग्लिश इम्प्रूव करने का ये एक बहुत ही फैंटास्टिक वे है ऑडियो बुक्स। आजकल बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑडियो वर्जन्स भी उनके अवेलेबल हैं। कई बार हमारा रीड करने का मन नहीं होता तो हमें ये ऑडियो बुक्स को ज़रूर लिसन करना चाहिए, चाहे कॉन्शियस माइंड के साथ चाहे अनकॉन्शियस माइंड के साथ। अब इसका मतलब क्या है? कॉन्शियस माइंड जब चाहें आप दिन के टाइम उस ऑडियो बुक को सुने, आप चाहें तो साथ में उसे रीड भी कर सकते हैं। और अनकॉन्शियस सोने के टाइम से पहले आप अपने ईयर प्लग्स लगाएं और वो ऑडियो चलती रहे, आपको नींद आ जाएगी। आप सो रहे होगे लेकिन इंग्लिश फिर भी आपके कानों से आपके दिमाग तक जाती रहेगी और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। नंबर 2, इससे आपकी काफ़ी हद तक लिसनिंग एबिलिटी इम्प्रूव होगी और आइल्स में लिसनिंग एक सेक्शन रहता है। नंबर 3, आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी। जितना ज़्यादा आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे उतनी करेक्ट इंग्लिश आप बोलने की कोशिश भी करेंगे। नाउ द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ आई हैव अ चांस। ट्रस्ट योर होप्स, नॉट योर फियर्स। Written by David Mahoney. In the film Dumb and Dumber, Jim Carrey finally gets a date with his ideal woman and tells her he is in love with her. Then he asks her, "What do you think are my chances, 1 out of 10?" After barely a moment's thought, she bluntly answers, "More like 1 in a million." Carrie grows very serious, and then a huge smile breaks out on his face. "Wow!" he exclaims ecstatically, "I have a chance!" For once, at least, this character's simple-mindedness worked in his favor. He is in the eternal optimist, acknowledging the 1 millionth of the glass that is full rather than the rest that is empty. His attitude is more prone to create success than someone who would be turned away by initial rejection. Many great people were rejected before they became celebrities. Einstein failed mathematics. Beethoven, violin teacher, called him hopeless as a composer. The sculptor Rodin failed 3 times to gain admission to art school. 18 publishers turned down Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull before it became a sensation. Walt Disney was fired by a newspaper editor for lack of ideas. Several record companies rejected the Beatles before they made their first album, and one producer commented that their music was passé. Remember that your destiny is determined not by chance, but by choice. No matter what chances you are quoted by statistics, you have the ability to make your own statistic. Sometimes all you need is that one chance in a million. If you capitalize on it, it is all worth it. I hope you really enjoyed this story, and if you want me to share more such motivational, inspiring, interesting stories with you, tell me in the comment section and I will come up with more and more such videos for you. Thanks for joining me and take care of yourself. Bye bye.